आजकल ये बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं जहाँ पर लोग फ़ोन करके आपको कुछ नोटिफिकेशन या पिन Yes. विन मांगते हैं. तो ये हाउ डज दिस ऑपरेट? दिस इज समथिंग व्हिच पीपल माइट want to know about. Tinder में I also found one bug which allowed me to log in into any Tinder account. Domino's got hacked, and some hacker put their data on some website where anyone was able to search using phone number कि मेरा address क्या है. तो Anand is better known as one of India's best known white hat hackers. Hi everyone, really pleased to welcome all of you in this latest episode of Gold Tellers podcast series. And today I am super thrilled to get on this show one of my very good friends, Anand Prakash. Anand is better known as one of India's best known white hat hackers and very illustrious past in terms of security, where he is I think India's best bounty hunter for several well-known platforms like Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. And amongst the world's top 3-5 bounty hunters for these platforms. Bounty hunters, just for everyone's reference, is a person who spots security bugs in these large platforms, which despite their large security teams, they are not able to identify. So Anand, with his own skill sets, has established a big career in security, and he is the founder at one of the best or the biggest security agencies in India, which PingSafe, which provides cyber security services for most of the large unicorns in the country, and very well known person in terms of someone who is accessed by government agencies for their security needs or references, etc. So without further ado, now welcome Anand to this episode. I think we've had largely a lot of finance guests. You're the first non finance background guest whom we've had, so very excited for this podcast. Security is an extremely relevant issue today with the kind of security issues that we find, digitization that has happened. A lot of transactions are online. We see UPI frauds. So, we would want to know from you, a lot of these subjects. We'll talk about it. But first and foremost, I want to know your journey of becoming a white hat hacker or an ethical hacker, as they call it in more easier words. So, over to you. Yes, so first of all, thank you so much for having here. And on the journey side, I started doing this during my college days, when on one fine day I opened Twitter, and someone posted over Twitter that they got like $500 bounty from Facebook's bounty program. And I was like, I should also try it. After like 3-4 months of trying, I ended up finding my first bug on Facebook. I also got $500, and $500 is a big amount when you are in back in time. Yeah, when you are in college also, right? So that's how the interest started. And what was this bug, if you could? Yes, so this was mostly around, I was able to see people online when they have put me offline. Wow. When we put me on some exception list or something. So very small bug related to privacy. But this was the very beginning of my journey. This was in 2013. Okay. So then I ended up hooking so much to the Facebook's bounty program. And while you were doing this, you were a student at... Yes. I was... At a tech college, yes, right? I was doing BTech, engineering. Engineering at that point of time in computer science. Right. So like I ended up finding then like so much bugs on Facebook. I found a bug which allowed me to log in into any Facebook account in the world. So if I have your phone number or your username, which is public information by any chance, I would be able to log in into your account within like 10-15 minutes. Very scary to know this, that companies of that size were not able to identify these bugs.
Yes, I think there is nothing like 100. What we believe is there is nothing like 100% security, right? So these companies, they have like big security teams in house. They have proper checks and balances, like tooling also done in house to prevent these security flaws. But still, like security researchers like me are able to figure out these issues without having any access to their systems. So that's like scary part. But like people like me, they try to figure out these vulnerabilities from outside and then ethically report them to the company to ensure that everyone's data is safe and secure. For instance, my Facebook bug could have impacted all the billions users which are out there. Imagine someone's Facebook account getting hacked, their photos are out there in public, their chats are out there in public. Imagine some black hat hacker figuring that out, for, selling the bug for like $1 million, right? That would have impacted them very heavily, right? So the impact is very huge, and I believe like security plays a very important role in is going to play even more important role in people lives going forward. Right. So Anand, or like you have been involved with a lot of companies like this, Twitter, LinkedIn में. So any examples आप और देना चाहते हो which for our users to understand what vulnerabilities you have spotted in these companies, some interesting ones, some interesting anecdotes. हाँ, उसमें एक इंटरेस्टिंग था. सो इन उबर आई स्पेंट लाइक 7-8 months. फर्स्ट आई फाउंड अ वेरी लो इम्पैक्ट बग, देन आई फाउंड अनदर लो इम्पैक्ट बग. अच्छा, क्या था लो हाँ, मैं impact बता bug? रहा हूँ. तो दो लो इम्पैक्ट बग थे. उनको आई कंबाइंड देम टू क्रिएट अ वेरी हाई क्रिटिकल इम्पैक्ट बग. ओके. और बग का इम्पैक्ट ये था कि इफ आई नो योर फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, वो तो वैसे भी डेटा ब्रीचेज में सब जगह आजकल पब्लिक है, राइट? तो आई कुड लॉग इन इनटू योर उबर अकाउंट. अच्छा. Then I could book rides from your account using your payment methods, right? राइड हिस्ट्री आपकी देख सकता हूँ. बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें प्रीवेसी, कि कहाँ कहाँ पे आप गए हो पास्ट में, कहाँ से कहाँ कैब लिया आपने, राइट? काफ़ी स्केरी, आपकी करंट लोकेशन क्या है, राइट? जैसे अभी एक नाइटमेयर मेरे साथ हुआ था कि लाइक वन ईयर पहले दिस डोमिनोज गॉट हैक्ड एंड सम हैकर पुट देयर डेटा ऑन सम वेबसाइट वेयर एनीवन वाज एबल टू सर्च यूजिंग फोन नंबर कि मेरा एड्रेस क्या है. तो वन ऑफ माय फ्रेंड ही एंटर्ड माय फोन नंबर एंड सेंड मी माय एड्रेस, इज दिस योर करंट एड्रेस? अच्छा. I had eaten like Domino's pizza, so I had to bear. डोमिनोज सबने खाया है कभी ना सबने खाया कभी. इंडिया में. या सो ये काफी स्केरी है. लाइक दिस इज रियल लाइफ एग्जांपल. इमेजिन ये आपके फ्रेंड के साथ हो रहा हो, आपके साथ हो रहा हो, कोई एड्रेस पे पहुंच जा रहा हो, right? So security is like very critical both for enterprises as well as for ensuring user safety as well. और इसमें जैसे आपने बताया कि यू कंबाइन टू बग्स टू गेट इनटू वन. तो फर्स्ट बग वाज द addresses through that domino thing. What was the other combination that you did? No, so Domino's was a different case study. Okay. It was not a bug. Okay. I am telling you the impact of security. अच्छा. Domino's में क्या हो रहा है? Okay. Uber वाले में there were two different bugs, काफी technical, अच्छा. right? और उनको combine करके एक high critical impact bug बन गया. They fixed it very quickly after the report. And this bug was limited to India or this? No, was a across global the bug? world, global bug. Wow. All the bugs are global. अच्छा, all the bugs are Yes, yes. global. Tinder में I also like found one bug which allowed me to log in into any Tinder account. Right? तो imagine कि आपके उसमें chats दिख रहे हैं किसी को. Oh, insane that is. Yes. तो that's the crazy part. और आप कितने जल्दी इन्फॉर्म करते हो और इन लोग कितने जल्दी एक्शन लेते हैं? तो मोस्टली क्रिटिकल बग्स का मैंने देखा है कि 1 hour 2 hours में दे एंड अप फिक्सिंग देम आफ्टर ट्रियाजिंग, आफ्टर वैलिडेटिंग कि ये वैलिड बग है. 1-2 hours में फिक्स हो जाता है. अच्छा. इशू. तो बग्स छोटे होते हैं बट इम्पैक्ट इज वेरी वेरी हाई. बग्स आर आल्सो इम्पैक्टफुल बट द प्रॉब्लम इज कि मिस हो गया गलती से. माने बग्स ऐसा नहीं है कि ओवरसाइट का बग होगा या उस टाइप का कुछ बग है. Yes. That has an impact which is huge ramifications. Yes. और हमारे लिए फॉर एथिकल हैकर्स इट्स अ चैलेंज कि यार कोई ब्लैक हैट भी देख रहा होगा. व्हाट इफ दे फिगरिंग आउट दिस बग फर्स्ट, दैट बग फर्स्ट बिफोर यू एक्सप्लॉइट इट्स. कई केसेस में मे बी द हैकर एक्सप्लॉइट इट्स, राइट? और हम लोग बाद में रिपोर्ट कर रहे हैं. तो ये भी हो सकता है, राइट.
and we take like legal permission, ethical written permission from these companies to disclose after the issue is fixed. If they fixed, if they permit, then only we disclose. Otherwise, we don't disclose. बट कुछ लोग होते होंगे जो इन्फॉर्म नहीं करके खुद के लिए एक्सप्लॉइट करते होंगे. Yes. क्योंकि आपको तो यहाँ पर यू वुड गेट ओनली $1,000, $10,000, मैक्सिमम $15,000, बट if they actually misuse it, they can misuse it for much bigger. Yes. Not only I have seen like Telegram groups जहाँ पे बोलते हैं कि अगर आप किसी के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर दोगे तो विल गिव यू $5,000. अच्छा. तो इमेजिन ये सेम बग मुझे भी मिला हुआ है ट्विटर में. अच्छा. किसी अकाउंट से ट्वीट करने वाला पब्लिक है. दिस इज आल्सो पब्लिक. तो इमेजिन कि सारे किसी if a black hat hacker starts collecting like 5K USD from like and tweets from all the prominent accounts on the platform. हाँ, काफी सेलिब्रिटीज का हम देखते हैं कि हैक हो गया है, राइट. सो नाउ आनंद, फॉर आवर viewers, in India last 3 years हमने देखा है कि UPI has exploded, got more than 1 billion transactions and everyone is online, everything is online now. So and डिजिटल इम्प्रिंट सबका सब जगह रहता है. जैसे आपने भी बोला कि एड्रेसेस सबका मोस्टली कहीं ना कहीं पर लीक है. देयर इज नथिंग कॉल्ड privacy once you are online. Yes. Addresses क्या मतलब कॉन्टैक्ट बुक हो गया आपका. अच्छा. सब कुछ मतलब you give end user access दे देता है. I agree. माइक तक सुनने का परमिशन दे देता है. SMS रीड करने का दे देता है. And some of these companies they use intelligence on top of it, right, to create more personalized things or increase their revenue. समझ गया. तो डेटा तो है सबके पास. सबके पास है. तो इससे आप like what do you recommend end user to how do they protect themselves when they go online? Especially काफी लोग हैं जो tier 2 tier 3 cities से है. Information levels are not good. A lot of the older generation, for obvious reasons, उनका जो understanding of this subject is not high. Yes. So what do you recommend to these people? Yes, and जैसे coming back to this, right? Most of the majority of our population is like that, where they don't understand security, right? कोई ऐप यूज कर रहे हैं, कोई ऐप इंस्टॉल कर लिया फोन में, अब उसको माइक्रोफोन का भी परमिशन दे दिया, कॉन्टैक्ट्स का भी दे दिया, राइट, सब परमिशंस दे दिए. अब दैट ऐप कैन डू एनीथिंग. दैट्स द प्रॉब्लम. उनको these apps are mostly in English, right? सब इंग्लिश में, they are not in their native regional languages. तो अब उसमें कुछ रिक्वेस्ट आया, they clicked it और कुछ 4-digit UPI पिन डाला and money is out from their bank, right? तो ये काफी प्रॉब्लम्स मैंने मेरी जगह पे देखा है. मतलब in my native also I have seen this, where people they use these UPI apps but they don't know कि इससे क्या impact हो सकता है if they end up falling in some phishing trick or something like that. So do you suggest people don't use UPI apps, or what is that you suggest? Because that would be difficult in today's time. Yes, so I suggest they become aware. देखो टेक्नोलॉजी तो आएगी, but use technology in a safer way, and also like they need to be aware about कि इसका security कैसे होगा. Maybe like these UPI apps or any other app, right? They can start running campaigns. कुछ campaign run कर लिया security के ऊपर in their regional language, educate them about security, right? But what I feel like is इनका ये priority नहीं होता है. their first and foremost जल्दी काम करना है. उनका प्रायोरिटी ये होता है कि यार हाउ डू वी इंक्रीज आवर रेवेन्यू. तो एजुकेशन पे नहीं ध्यान देते. एजुकेशन पे ध्यान दें, और वो भी रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए. यस. दूसरा है कि अभी आजकल ये बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं जहाँ पर लोग फोन करके आपको कुछ नोटिफिकेशन या पिन विन मांगते हैं. तो ये हाउ डज दिस ऑपरेट? दिस इज समथिंग व्हिच पीपल माइट वांट टू नो अबाउट कि ये कैसे होता है, ये वाला फ्रॉड कैसे होता है. देखो ये काफ़ी कॉमन है, मतलब वेरी कॉमन. जितना भी मैंने साइबर क्राइम में भी काम किया है, लाइक दिस इज़ द मोस्ट कॉमन केस आई हैव सीन. तो इसमें बेसिकली इसको दे लाइक ट्राई टू ल्यूर द विक्टिम कि आपको कुछ कैशबैक मिलेगा. देन दे सेंड लाइक सम कलेक्ट रिक्वेस्ट, पे रिक्वेस्ट टू द यूज़र,
और वो यूजर को बोलते हैं कि द मोमेंट यू एंटर योर पिन आपके अमाउंट में इतना आ जाएगा, आपके अकाउंट में इतना अमाउंट आ जाएगा, या फिर बट आपका होता ब्लॉक क्या हो है, जाएगा हाँ कार्ड। आपका ब्लॉक हो जाएगा। ऐसे करके दे ट्राई टू ट्रिक द विक्टिम। बट इसमें और ज्यादा इजी कैसे हो गया है, जैसे पास्ट 1.5 ईयर में इंडिया में काफी कंपनीज का डेटा ब्रीच हुआ, राइट? सो हैकर्स आर लाइक यूजिंग दैट डेटा टू टू काइंड ऑफ पोज एज अ जेन्यून पर्सन। अच्छा। जैसे अब डोमिनोज का हुआ, अब देखो डेटा तो एक बार पब्लिक हो गया कंपनी का, तो वो पब्लिक ही है, वो हट नहीं सकता, कोई कितनी भी रिक्वेस्ट कर ले, दैट डेटा विल गेट सर्कुलेटेड एवरीवेयर ऑन द इंटरनेट। चाहे वो डिलीट $10 भी कर दे तो वो तो $10 ऑलरेडी कॉपीज यस बन गए हैं उसके। यस यस, वो बन चुके हैं। और आई हैव सीन ऑन डार्क वेब की $10 में आपको डेटा मिलेगा इस कंपनी का, 100 मिलियन यूजर्स, राइट? तो ये प्रॉब्लम है। तो विक्टिम्स, अटैकर्स यूज दिस इंफॉर्मेशन कि अब मैं आपको कॉल करूं कि आपका एड्रेस ये है, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, अब मैं डेटा ब्रीच का डेटा यूज कर रहा हूँ मेरे बैकएंड में, आपको बोलूँ कि आपका एड्रेस ये है, आप यहाँ पे रहते हो, दिस इज योर फोन नंबर, दिस इज योर मदर्स नेम, आई कंफर्म कि मैं बैंक से हूँ। आपको क्या लगेगा? आप बोलोगे कि हाँ इसको तो आधी इन्फॉर्मेशन पता है, तो बैंक से ही लग रहा है मुझे। देन दे विल यूज दैट ट्रिक टू इवन क्रिएट मोर। इट बिकम्स वेरी इजियर for them to execute it, right? वो आजकल आई थिंक बैंक्स बोलते रहते Yes. हैं कि we will not call for OTPs or any Yes. of those things. Yes. IVRs जो होते थे पहले, Yes. वो सब आप you suggest that should not be done by people at all. Yes, but इसमें वही same awareness वाला piece is the key problem, right? And also like the data breaches, जैसे we are ignoring the corporate thing, right? Most of the enterprises are moving to cloud right now in India, right? And cloud में most of them don't have an idea कि कैसे क्या करना है। Most of them end up doing like security compliance कर लिया, कुछ checklist follow कर लिया 10 items, and then they feel like कि हम secure है। But ऐसे नहीं होता है। Hackers are looking out for a different kind of cloud security issues, और आपकी ये checklist से काम नहीं चलने वाला है। अगर सुंदर सा PDF रिपोर्ट आया, very beautiful, that won't work. Attackers are looking out for your data, right? So the attacks have become more sophisticated, but what I see is कि जो current solutions which are out there, right, they follow a very traditional approach to solve this problem, right? चोर की तरह नहीं सोचते हैं। हाँ, that's the problem. If you have to beat hackers, your solution or something has to think like an hacker. अच्छा, right? Right. It shouldn't be a checklist based approach. So दो चीज़ आनंद इसमें मैं पूछना चाहता हूँ आपसे for again the benefit of viewers. तो एक आपने क्लाउड बोला, तो क्लाउड क्या होता है एंड वहाँ से कैसे डेटा चोरी होती है, और दूसरा है आपका डार्क वेब। हम बहुत सुनते रहते हैं मूवीज में सब जगह पे डार्क वेब के बारे में, तो ये दोनों चीज़ के बारे में थोड़ा बताइए। यस, सो अर्लियर क्या होता था कि ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर होता था वेयर कंपनीज कैन डिप्लॉय, मैंने अपने ऑफिस में ही एक यस एक हाँ, है जहाँ पर ऑफिस और सम अदर प्रोवाइडर ऑन प्रेम हो गया आपका, यू मैनेज इट, यू डोंट हैव एपीआईज टू कम्युनिकेट, नो डैशबोर्ड्स, सब कमांड लाइन से आप मैनेज कर रहे हो, राइट। बट नाउ क्लाउड से थोड़ा स्पीड आता है, राइट? क्लाउड इज द सेम रेप्लिका बट विद डैशबोर्ड्स, प्रॉपर यूआईज, एपीआईज, इजी तो हो गया और सस्ता भी है। हाँ, तो सब वही करते हैं, इजी हो गया, राइट? बट अब इसमें वो प्रॉब्लम क्या है, जो एंड यूजर में अपने प्रॉब्लम है, नेक्स्ट आई एग्री, सेम प्रॉब्लम, नेक्स्ट दे कंपनीज एंड अप क्रिएटिंग वनरेबल थिंग्स इन देयर एनवायरनमेंट, और उनको विजिबिलिटी नहीं है कि क्या वनरेबल क्रिएट हो रहा है। और क्लाउड में 100 डिफरेंट सर्विसेज है, तो उनको ये नहीं पता है कि 100 डिफरेंट सर्विसेज कैसे आपस में बात कर रही है, एंड हाउ समवन कैन एक्सप्लॉइट दैट वनरेबिलिटी बाय कंबाइनिंग 100 थिंग्स, राइट। तो क्लाउड माने कि बेसिकली खुद का सर्वर का पैसा बचाने के लिए वो एक कॉमन सर्वर यूज करते हैं, और प्रॉब्लम है कि वो स्टैंडर्डाइज होने के कारण लोग उसमें ज़्यादा दे डोंट नो हाउ टू यूज इट। यस, एंड काफ़ी न्यू है in this part of the world, for mostly for enterprises. Like we have been working on cloud from past like 12 years. Right. काफी, right, very early on, and we have been finding bugs on cloud from past 12-13 years. Right. But the problem is जो अभी ट्रेडिशनल हो रहा है, they are using a very traditional based approach to solve this problem. Checklist, fancy dashboards,
that's creating these. इससे क्या होगा? The enterprises, they store like lot of data in them, and they will end up leaking lot of data, and उससे और easy हो जाएगा attackers के लिए to target these users. एंड आनंद, व्हाट इज डार्क वेब, क्या होता है? बिकॉज ये हम बहुत सुनते हैं, डार्क वेब कुछ ऐसा चीज़ है कि मैं यूआरएल से जा सकता हूँ या बाय मिस्टेक आई क्लिक ऑन एनी लिंक, एंड व्हाट इज द डार्क वेब एंड हाउ कैन पीपल एक्सेस इट? कैन इट बी एक्सेस्ड बाय मिस्टेक कि मैं भूल से उस रास्ते चले गया और वहाँ पर? देखो, भूल से तो एक्सेस नहीं होगा. अच्छा. You have to follow some क्या है steps. डार्क वेब? You have to follow some steps. Like if you want to access it, you can follow some steps. Publicly available है, you can access it. अच्छा. Right? It's a very different network altogether. अच्छा. So basically, hackers. इंटरनेट से ही जा सकते हैं आप उसमें? Yes. अच्छा. पर इंटरनेट से ही कुछ और. Create a different tunnel. Okay. ठीक है. बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? सो डार्क वेब में देर आर मल्टीपल फॉरम्स. मैं इसको थोड़ा और सिंपलर में बोल रहा हूँ. हाँ जी. राइट. तो फॉरम्स बन जाते हैं. फॉरम्स क्या होते हैं? उसके ऊपर जो इलीगल एक्टिविटीज करना होता है. राइट. इफ दे वांट टू सेल एनीथिंग, जैसे क्रेडिट, अब इंडिया में मान लो कुछ क्रेडिट कार्ड का डेटा ब्रीच हुआ. अब अभी आप पब्लिक में तो जाके बोल नहीं सकते, आप ट्रेस हो जाओगे. राइट. तो हैकर्स यूज दैट फॉरम टू से कि यार मुझे 1 मिलियन क्रेडिट कार्ड नंबर्स है मेरे पास इंडिया के. Right, or some other country, and then basically I'm selling each card for like $10. अच्छा. ठीक है, और आप परचेज कर लो. अब देखो, अटैकर तो $10 में कार्ड खरीद लेगा. आपको किसी का कार्ड चाहिए, आप खरीद लोगे. राइट. और क्या होता है कि आप डिलीट करवा भी दोगे वहां से, तो देयर आर अदर फॉरम्स, वहां पे फिर से डेटा आ जाएगा. राइट. तो इट बिकम्स अ नेवर एंडिंग गेम्स. और जितने भी ब्लैक हैट हैकर्स है, जो आपको, जैसे हर कोई तो एथिकल नहीं होगा जो आपको बग से रिपोर्ट करेगा, और कंपनी सिक्योरिटी को कम प्रायोरिटी देती है. राइट. जब हैक होती है, ये तो बिल्कुल मुझे लास्ट 10 years में समझ आ गया है. एवरी कंपनी स्टार्ट्स गिविंग प्रायोरिटी टू सिक्योरिटी व्हेन दे गेट हैक्ड. मतलब उनका जो वेलोसिटी है, आई हैव ऑब्जर्व्ड इन लाइक एनी अदर कंपनी. तो यूजर कैसे समझे कि ये कंपनी सिक्योर है? जैसे मैं अगर, देखो, मेरा तो सिंपल सा फंडा है. मुझे पता लग जाता है ये कंपनी हैक हो गई है, मैं उसको यूज नहीं करता कभी. अच्छा. एक बार जैसे आप डोमिनोज बोल रहे हो हैक हो गया, तो उसको यूज नहीं करना चाहिए. यस, मैं तो नहीं करता. अच्छा. ओके. ठीक है, मैं खाना ही छोड़ दिया. ठीक है. बट लाइक इट्स क्रिएट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. राइट. अगर मेरा एड्रेस फिर से लीक हो गया तो. ओके. बट ऐसा नहीं है कि वो ऑलरेडी हैक हो गए, तो नाउ सिंस यू सेड कि दे विल फोकस मोर ऑन द सिक्योरिटी. दैट डिपेंड्स. मैंने देखा है कि फोकस मोर हाई साइड पे हो जाता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि क्या वो यूज कर रहे हैं. ओके. How serious are they about it? I have also seen some companies getting hacked like 3 times. 3 बार डेटा लीक हो गया है, but they don't give priority to security. They don't care about users' data. They only care about getting customers by paying some cashback. अच्छा. And the customer also wants that only. Yes. Okay. Yes. And Anand, now आप ये जैसे बग हंटिंग करते हो, तो हम मूवीज में देखते हैं कि पीपल, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग टू सी, विथ a lot of numbers flowing around computers that the hackers are able to access data. तो इसका बैकएंड में कैसे आप करते हो? माने व्हाट इज द बेसिक प्रोसीजर? लाइक जस्ट एज अ लेमैन इट्स वेरी फैसिनेटिंग कि क्या चल रहा है पीछे में. तो ये कैसे होता है? देखो, इसमें जो बेसिकली एप्लीकेशन नेटवर्क जो भी होता है कंपनी का, राइट, वी ट्राई टू एनालाइज इट फ्रॉम आउटसाइड. अच्छा. वी डोंट हैव एक्सेस टू एनीथिंग. हाँ जी. वी ट्राई टू सी लाइक वेयर देयर डेवलपर्स हैव लीक्ड क्रेडेंशियल्स आउटसाइड, वेयर व्हाट आर देयर सबडोमेन्स, व्हाट आर देयर सर्वर्स, लाइक व्हाट एप्लीकेशंस डू दे हैव, हाउ कैन आई गेट इनटू एक्सेस इनटू दोज एप्लीकेशंस. राइट. फॉर एग्जांपल, फॉर मी टू फाइंड बग इन Uber driver application, I become a driver. अच्छा. I registered myself as a driver and then started finding bugs in Uber driver app. अच्छा. Right. Okay. So we think like that, right? And then we use some of proxies to intercept the traffic and try to bypass logic of the application or the infrastructure. Basically, we have some X number of things in our mind that we try to replicate. And आप बोल रहे हो ये सब X number of चीज भी लोग फॉलो नहीं करते हैं. Yes. And that is X नहीं है, ये never ending है, because Never security ending, is like very fast. You have to become updated to. जैसे टेक्नोलॉजी Yes. प्रोग्रेस करेगा Yes. वैसे उसके
मैंने हैक्स भी ज़्यादा Correct. बढ़ते रहेंगे. Correct. Yes, Anand. So now coming to, lot of individuals now want to take up cybersecurity as their career. So आप उनको क्या suggest करते हो? माने what is a good starting point? Any books that they should read, any blogs, any courses that they should do. So what is your advice to these youngsters? So, देखो courses like what they can do is they should start learning some basic coding languages like Python, Node.js, Golang, some of the backend languages as well as some of the front-end languages too. मतलब at the end of the day, they should be able to read code and analyze what's happening on the code because that will help them find even more security bugs. Without having knowledge of coding, if they become like tool monkey running some tool and then figuring out security issues, it's going to be very dangerous for them. Abhi to they will end up finding something, but that's not scalable in long term, right? And the second part is they should start reading the security research blogs which are out there, findings which are being discovered by other security researchers, right? And then try finding them manually, right? I'm not that much inclined towards like doing some certification in general, right? I think most of the knowledge is out there on the internet. They can use that to kind of have like more practical experience and figure out vulnerabilities. And how do you yourself, आपके जो company है PingSafe, it is one of the largest security companies in India right now, securing most unicorns. So how do you identify people in your team? Yes, so mostly having practical experience, a second, third year in their college. For example, if we are hiring interns, second, third year in college, we look at their track record, what open source projects they have contributed to, what code they have written in the past, how much is their willingness to learn. We also look out for some of the security research background too, right? That's super important, even for other types of roles that we hire. Okay. Yeah. So We don't look out for like pointers, academics and all. academics and all. मैं खुद मतलब 2 बार फेल हुआ था in college, like first semester, third semester. तो वो सब we don't look out for that. We are only looking out for skill sets. Interesting. And last में the most important part is the cultural fitment as well in the company. तो किस टाइप का कल्चरल फिटमेंट देखते हैं आप? Mostly learning capabilities, fitment within the team, willingness to learn, ये सब open to learn. That's the attitude. It shouldn't be like restricting itself to like only one specific area, having more in-depth knowledge across the spectrum. And Anand, now आप जैसे आपने बताया था कि यूपीआई के फ्रॉड्स ये सब होते हैं, तो लाइक एट गोल्ड टेलर व्हाट वी रेकमेंड पीपल is that when you have bank accounts, make one bank account separately for UPIs, where your amounts that you hold in those bank accounts are limited, so that in case if there is a fraud that happens also is limited to a certain amount. So you should have a primary bank account and a secondary bank account, with the primary bank account having your larger funds and the UPI one having a smaller fund. So any fraud is limited to a smaller corpus of your money. Now, ये तो we discussed about the monetary impact of the fraud. Now, what about the non-monetary impact? जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि यूएस में एक बंदे ने एक जन की डॉटर का वॉइस को एआई के थ्रू इमिटेट करके एक्सटॉर्शन मांग लिया. So what about the कुछ, can you throw some light on the non-monetary frauds, scams? इंडिया में ये काफी कॉमन है. देयर वर लॉट ऑफ इन पास्ट 2 years कोविड के टाइम से लोन एप्स थी काफी ज्यादा. तो लोन एप्स क्या करती है, यूजर ने इंस्टॉल कर दिया, दे टुक लाइक 5,000 रुपीज लोन फ्रॉम द ऐप. क्विक होता है राइट, काफी. बट दीज लोन एप्स दे एंड अप टेकिंग योर एंटायर परमिशन. कॉन्टेक्स्ट पूरा कॉन्टेक्ट्स ले लेती है, आपके को फोन से निकाल लेती है. तो अभी क्या होता है कि लोन आप 5K का आपने लिया, बट आप 10-15 डेज लेट हो गए, राइट? अब क्या होगा, वो लोन ऐप जो है चाइनीज ऐप या फिर सम एक्स ऐप, राइट, व्हाट दे वर डूइंग इज दे हैव दिस कॉन्टैक्ट लिस्ट, और वो आपके जितने भी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है उनको सबको मैसेज भेज दिया. दे ऑल्सो हैव एक्सेस टू योर फोटोज. आपकी फोटो भी निकाल ली,
और ऐसे भेज दिया कि दिस इज द पर्सन हु हैज नॉट पेड लोन टू ऑल योर रिलेटिव्स, एंड आई हैव सीन पीपल कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस इज ऑल पब्लिक न्यूज. बट ये कौन, जैसे इंडिया वाले ऐप तो चाइनीज नहीं होंगे? नहीं, चाइनीज एप्स. नाउ गवर्नमेंट हैज बैंड मोस्ट ऑफ देम. अच्छा, तो हाउ डज द प्रोसेस वर्क, बिकॉज इंडियन कंपनी विल बी ओनली एबल टू बी प्रोवाइडिंग द लोन? नो, दे उसमें कोई रेगुलेशन नहीं था, लाइक एनीवन कैन लिस्ट देयर ऐप एंड स्टार्ट प्रोवाइडिंग लोन्स. अच्छा, ऐसा कुछ एप्स कर रही थी. अच्छा, ऐसे भी Yes. एप्स थे? यस थे. ओके, वो बट बैन हो ऐसे गए. अब नहीं है, बैन हो गए वो? कुछ कुछ अभी बचे होंगे, बट मोस्टली देयर वर लॉट ऑफ देम अर्लियर. ओके, यस. ओके. सो एंड इससे कैसे सतर्क रहा जाए? बेसिकली सीइंग कि वो क्या आप इंस्टॉल कर रहे हो अपने फोन में, अवॉइड सम शेडी एप्स, राइट, एंड आल्सो सी व्हाट परमिशन एवरी ऐप इज हैविंग. यू कैन रिस्ट्रिक्ट देम, राइट. तो जैसे माइक्रोफोन? यस, माइक्रोफोन हो गया, फोटोज हो गया, एसएमएस रीड करना हो गया, ऑल दैट यू कैन रिस्ट्रिक्ट. कॉन्टैक्ट्स हो गया. व्हाई वुड अ ऐप नीड योर कॉन्टैक्ट्स परमिशन? एंड एआई तो जैसे बढ़ते जा रहा है, रिस्क भी बढ़ते रहेंगे. यस, यस. सिक्योरिटी रिस्क तो बढ़ते रहेंगे विद एआई कमिंग इन. जैसे चैट जीपीटी में आई हैव सीन पीपल पुटिंग देयर इंटरनल कोड, एंड दैट कोड इज हैविंग सम सीक्रेट्स दैट दे आर फीडिंग टू चैट जीपीटी. अच्छा, राइट. Now ChatGPT has your secret. This is the most common thing that I have seen. तो मैं अगर कंपनी हूँ, मैं अपने यूजर का डेटा उसमें डाल देता हूँ, तो वो पब्लिक हो जाएगा? Yes. पब्लिक नहीं होगा ऐसे डायरेक्टली, दे वोंट मेक इट पब्लिक, बट यू आर गिविंग योर डेटा टू सम थर्ड पार्टी. अगर वो ब्रीच हो गए, Yes. तो Yes. माने कैस्केडिंग रिस्क. Yes. बहुत. Yes. Correct. And Anand, you have been involved with a lot of government agencies, like helping even the police in India, I think even the US government, Yes. and all of that, in terms of advising them for their security needs. So what kind of cases do you see in India that need police intervention? Mostly all these loan apps. Second is like UPI frauds. Okay. Third is like someone harassing someone over social media, Acha. compromising their account, and then sending random pictures to all their contact list. These are some of the most common ones, and some of these victims that get very traumatized by seeing all of this. These are the most common ones in India, and I think this is all because of awareness. अभी क्या होगा, आपका पासवर्ड इज लाइक लेट्स से Vivek@123. तो लोग चेंज नहीं करते हैं उसको. अब आपका पासवर्ड वो लीक हो गया होगा किसी और ब्रीच में, लाइक अ ईयर बैक, बट स्टिल योर पासवर्ड इज Vivek@123. आपने 2 फैक्टर भी नहीं लगाया कहीं पे, राइट. 2 फैक्टर नहीं लगाया होगा, तो वो सेम पासवर्ड आप फ्यूचर में भी यूज करोगे. तो डिफरेंट पासवर्ड्स नहीं होते लोगों के. फिशिंग में हो जाते हैं लोग, कॉम्प्रोमाइज. So these are some of the basic things जो I think awareness is the key problem. 2 factor माने मोबाइल OTP वाला भी? मोबाइल OTP वाला. उससे you think lot some of level of will security become better? Yes. Okay. And इसमें आप क्या सजेस्ट करते हो, by any chance अगर ऐसा हो जाए किसी के साथ, तो what is the step of action that you recommend these people do? Whom shall they approach? Like what should they should do? file a cyber crime report immediately. We have a portal. Okay. Where anyone can file this report. Okay. And do not panic. Okay. That's the most important thing also when you go through the entire thing. और कभी-कभी लोग झूठा भी ट्राई करते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, तभी भी हैकर बोलता है हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, हमें रुपया दे दो. हाँ, वो सब तो मतलब फॉल्स है. लाइक दे हैव गॉट योर डेटा फ्रॉम सम अदर ब्रीच, एंड उस ब्रीच से आपका कुछ इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, and then they can say that we have some of your information, we have encrypted something on your machine, we have put a malware on your machine which is listening to your microphone, right. और वो ऐसे spam try करते हैं to extort money in bitcoins or some other cryptocurrency. And Anand, now coming to a slightly different subject for a bit. I think you are only 28 right now and you've achieved so much. So आपने, I think when you started doing all this, you were 16, 17 or so. And now you are running one of the largest security companies in the country, or of course, surely one of the most well-respected ones. So, आपने, startups are very, very,
एक्साइटिंग राइट नाउ, लोग Yes. बहुत जाते हैं स्टार्टअप्स में, तो आपका इन्वेस्टमेंट जैसे हाउ डिड यू सिक्योर योर फैमिली वाइल डूइंग अ Yes. स्टार्टअप, और आपका क्या एडवाइस है, आपका खुद का कैसा जर्नी रहा है? नहीं, मेरा जर्नी इसमें थोड़ा ऐसा था कि मतलब आई अर्न वेरी गुड अमाउंट इन माय इनिशियल अर्ली करियर ऑफ डूइंग बग बाउंटीज ओके. during my Flipkart time. So I ended up saving like what I could earn in next 10 20 years of my life. And that gave me a lot of comfort क्योंकि उससे I felt कि my family is safe and secure, right? And right, that's more Right, right, yeah, before yeah. starting up anything you need to have that backing. Backing. Otherwise it would create तो a lot कितना of बैकिंग problem. था आपका इन टर्म्स ऑफ I can't नंबर ऑफ इयर्स ऑफ? हाँ 10 20 years of backing, ओके. 15 to 20 years of backing. Yeah. So this is something which we also recommend to all our users at GoldTeller, to have at least 3 to 4 years of lifestyle expenses in investments if you want to, start something on your own, or and at least 6 months of lifestyle expenses in a liquid investment which you can access to. During COVID times, we have seen a lot of individuals coming back, facing job losses, etc., where they could not do anything. So it was a pretty bad experience for these guys. So Anand, this is Apart from one this, point. like you should follow basic hygiene of doing some investments. Also track them. Do some basic things like health insurance, term life insurance. Everything should be there for everyone Yeah. with higher amounts, right? एंड आप अपने खुद के इन्वेस्टमेंट्स कैसे मैनेज करते हो अभी, लाइक व्हाट आर दी, लाइक योर सेल्फ मैनेज, योर फैमिली इज इन्वॉल्वड इन दैट? So honestly, I learned this from you when I met you. So just to disclose, like I use Right. Gold Teller to like see some of my like findings. I Thank you wasn't for that. I wasn't aware like I wasn't aware about the concept earlier कि इसमें कैसे 10 to 20 years का हम लोग देख सकते हैं in a very simple easy to use, right? जिसको आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, it's a very gray area. If you ask something about security to me, I will be able to say like X number of things. But this was completely new to me, and when I was working with you, I looked at the product, and I got to know कि यार 10-20 years में क्या trajectory type हो सकता है. Right. So this basically gives you much clarity. If it was not Gold Teller, I would have basically realized this at a later point in time, 4-5 years later, doing some maths on Excel sheet, right? And with not having proper formula also on the back end, and that becomes very tricky. And what I feel like is everyone is missing that in my circle as of today. No, thanks. That is good to know about that. And Anand, abhi coming to other subjects on the security side. Now, you as PingSafe, as a company, you guys manage some of the largest unicorns in the country. What is the big challenge that you see that the companies, and most of the companies that you manage are companies which are in turn having lots of users? Yes. Our portfolio has like we secure like 3-4 billion transactions happening every month Wow. in India, right? And all the unicorns. We work with nearly every unicorn in India as well as some of the biggest enterprises also. So the amount of responsibility that we have is very high, and ensuring that threats are figured out in a very faster way from an attacker's perspective, not the traditional way. Yeah. But in companies में what do you see is the biggest problem area जो आप आके sort करते हो उनके लिए? So we fixed their cloud security within like 5 minutes. अच्छा. Yes. Within 5 minutes of integration, without any much hassle, they are able to see how they can get hacked from outside, अच्छा. how their infrastructure can get hacked from outside. And it's all continuous real time. That's the biggest part. So if a hacker has to hack you, right, they would end up finding that data like after 1 month or something, or maybe 24 hours or something, right? It depends on the hacker. But we let them know immediately as well as in pre-production. And that helps them to stay ahead of hackers. And वो पहले नहीं करते थे? पहले नहीं करते थे. That's the problem. अच्छा.
And or else they were using some other things which were like very noisy, not having full context, अच्छा. right? Which were only fancy things. And India or you, माने West में, what do you think about the security perceptions? Because the number of people online in India today, I think, is Yes. possible, and India became the most populous country also. Yes. You know, smartphone adoption Yes. is becoming so high. Yes. You know, most people, I think, uh, Most of the data is yeah. over here So I itself. think 60 crore people Yes, yes, have yes. more than 60 crore people have smartphones now Yes. in the country. So what do you suggest, in लोगों को how to secure themselves, and how do you think between India and how is India placed, positioned compared to other developed economies? So, security is a global problem. It's for every geography right now. But maturity wise, we are growing at a faster speed. Okay. There are other countries who are more mature than us. For example, some of cloud has been there since like past 10, 20 years. Right. We are adopting cloud now. So we'll have that challenge now that they were having earlier, right? So even hackers have also grown in past 10 years. Earlier the challenges were very different. Now we have challenges which are very different. So what I'm trying to say is there is nothing like 100% security, and it's a growing area, and you would see like a lot of innovation happening in this space coming years. And Anand, now comparing वाइट हैट हैकर्स, रेड हैट हैक और ब्लैक हैट हैकर्स, तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप जैसे आप लोगों के गुड के लिए करते हो, वो उसको एक्सप्लॉइट करके खराब करता है, बट Yes. इनका जो अपब्रिंगिंग होता है, लर्निंग होता है, इज इट एनी डिफरेंट फ्रॉम अदर No, I पीपल? think that's mostly the same. The only thing is the passion. What do you want to do? Do you want to end up saving data of users out there, or do you want to only consider the monetary part and sell it over dark web? एंड कितने लोग आप देखते हो जो लाइक यू वुड बी सीइंग पीपल बिकमिंग bad hacker versus ethical hacker? So There is no number to it, there is no but I number have to it. seen both of them. And apart from that, coming to our last few questions, one good question, one important question I had is retirement. You know, Yes. at 28, you have achieved quite a bit in your life, and today people are talking about early retirement at Yes. 40, 35. माने लोग काम नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें आपका क्या नहीं view नहीं है? मैन तो आई एम लिसनिंग दिस वर्ड फ्रॉम यू फॉर द फर्स्ट टाइम वी I haven't thought about it, but honestly you should think about the financial thing during the retirement. I think that's the you should have that visibility. When you run a startup, you have some visibility for both long term as well as short term, right? What you are going to do and going to happen, what's going to happen, Okay. right? But in this case also you should have that visibility. राइट. लास्टली आनंद, एक क्वेश्चन पूछना था कि अभी जैसे नाउडेज मोबाइल्स आर पॉसिबली द बिगेस्ट, आपने बताया कि डबल टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन करिए, so even more than our laptops, mobiles have become much more crucial for us. So any tips, best practices you would suggest for people using mobile phones कि क्या करना चाहिए in terms Yes. of any cleaning? Yes. Or should we install antiviruses on mobiles, because antivirus का concept है नहीं mobiles में. अगर एंटीवायरस इंस्टॉल करें तो ऐसा नहीं है कि एंटीवायरस वाला कंपनी ही हमारा डेटा लीक कर रहा है. Correct. तो इस पे क्या व्यू है आपका? हाँ, इसमें बेसिकली व्हाट वी नीड टू एंश्योर इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कीप योर सिस्टम अप टू डेटेड, द मोबाइल फोन अप टू डेटेड. एंड आई हैव सीन, जैसे आपने बोला कि मालवेयर वाला ऐप है क्लीनिंग वाला, उसमें कुछ बार दिखेगा कि 100% क्लीन्ड, बट दैट इटसेल्फ इज अ मालवेयर. ये तो एक चाइनीज ऐप था like couple of years back which I kind of figured it out. अच्छा. तो ऐसा भी होता है. So you need to ensure कि वो भी reputed, it's a reputed firm जिसका भी आप कैसे पता करें कि वो रेप्यूटेड फर्म है? लाइक इसका डेफिनेशन क्या है? go for like 4-5 top names you can search. अच्छा, और जो public App internet. Store में है टॉप Yes. 3-4, और रेटिंग्स बहुत होने चाहिए उनके. Not ratings, also the company. It shouldn't be like an individual developer. अच्छा. It shouldn't be like some
a random name, अच्छा. right? It should be a reputed company, right? That's the most important part, Right. right? And also, like, keep changing your passwords. Don't click on phishing links. Ensure you are entering your things on like valid sites. एंड फाइनल क्वेश्चन आनंद, तो आप अपने खुद के इन्वेस्टमेंट्स अभी कैसे करते हैं अपार्ट फ्रॉम योर इंश्योरेंस एक्सेट्रा? किन किन को इन्वॉल्व करते हैं एंड क्या व्यू है आपका So ब्रॉडली इसके personally, ऊपर? no individual is involved, अच्छा. and didn't get that time to kind of think about it. But I use gold teller also, like, normally to see. और आपके फैमिली में जैसे हम Yeah, कुछ family में, like, the only challenge that I see is if I have done something, they should know about it. So as of today, I think you guys are working on it already. Yeah. There should be a centralized place where I can invite my family members, Right. where they see all the data that I am having. I upload it on a single thing, highly secured vault, and someone from the family can log in and see all my details over there. Right. No, thanks, Anand. I think it was a very enlightening session, very practical tips, and yeah, thanks once again. No, for- thank you so yeah. much for having me Thank here. you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.